May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please be seated. Thank you, sir. Akash, Yes, sir. please tell us about yourself. Sir, myself Akash Tanwar. I belong to Sri Ganganagar district of Rajasthan, and I did my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sri Ganganagar, and after that I did my graduation from IIT Bombay in civil engineering. So, when did you pass out? I'm 2023 graduate, sir. What have you been doing since then? So just preparing for ESE Okay. exam. And what are your hobbies? Sir, my hobbies include playing volleyball and listening to Punjabi music. Okay. You're basically from Punjab originally? No, sir. Actually, it is a border area between Punjab, Haryana, and Rajasthan. Okay. What is the meaning of Jalwali? Sir, Jalwali. Jal is basically a tree that is our village at the main bus stop. We have a large big tree of Jal, so that's why the name. Jal means what? Jati? Jati tree? No, sir. It is a different type of tree. It is thorny? Sir, I am not aware about. You have seen the tree or not? Yes, sir. I have seen the tree. Okay. Is it same as Jatika tree? No, sir. It's different, huh? Sir, I don't know about the other name that you are talking about. Anyway. And what is Gharsana? Gharsana is the tehsil that I belong. What is the meaning of Gharsana? I don't know, sir. Some people say that you are a millennial child. Do you agree? No, sir. You are not a millennial child? What is the meaning of millennial child? I have heard Gen Z a lot in newspaper. Gen Z is the thing that is coming in news. So I think I will be considered as Gen Z. Yeah. So, which is the switching point? Sir, I am not exactly sure about the exact year, but I think it is 2000, like before 2000 and after. Yes. So, what are the features of what you call Gen Z? Sir, more like advanced or featured in technology. So they use more technology for doing their work or for interest purpose also. Their hobbies and the more time they want to spend with the like electronic gadgets. So that is the main point that I can recall. So, they want the computer to do their homework and assignments? Sir, computer is somehow like involved in the doing. So we'll take help of computer for doing the homework or assignment. So, how do we check whether the assignment which you have submitted is copied or chat generated or not? So there is some software of plagiarism check that in college we used to check for that. If there is some match from particular source, so they will tell that how much percentage of that is like similar of what we have written in the assignment. So when you were in college, you were giving assignments yes, sir. from ChatGPT or you doing them on your own? Sir, actually in 2023 I was not that exposed or familiar with ChatGPT. So in my third year I have most of the assignments. So during that period I was using Google as a like source of information, but not ChatGPT, because I was not exposed to ChatGPT at that time. But before submitting assignment, you are checking whether it's qualifying for plagiarism or Yes, not? yes, sir. So actually you are copying, but then checking and ensuring that it is not. Actually, there are some free software and some advanced, like our professor use some advanced level software that will tell more accurately, but we are using just the free software to
to check grammatical mistake or to check this plagiarism. So then what would you do if you come to know that you have to submit an assignment tomorrow? Yes, sir. And it is 70% plagiarism it is showing? What will you do to pass it on? Sir, I will try to modify and give it personal touch in terms of my experience or anything that can especially my like my own experience or my thing I will try to put it. And after there is some like paragraph rephrasal thing, so the sentence they will change, the meaning, the overall meaning will be same, but the language or the sentence they will change. So I think that will be not. So now this job ChatGPT can do, to make a assignment which even plagiarism software will not catch. I think it can. Okay. Yes. So, Mr. Akash, Yes, sir. I can see you have earned the Institute Academic Award for attaining the second position in the third year of BTech. Yes, sir. What happened to the rest of the years? Sir, actually, you were not consistent that time. in the first year of the starting, I was more involved in exploring all the activities that was possible there. And one particular point was there that most of the subject was related to JEE itself. And nothing of civil engineering was taught in the first year. Only one course in the second semester was there. Then? So I was exploring, and then in second year I came to know about engineering service, and just when the civil engineering started, like in the real sense, then I got interest in civil engineering. So from second year I really picked up studying. So in second year I was improved, because in the first year I got around 6.4 CGP. And in second year I got 8 CGP. So that was my improvement phase. And third year, fourth year I was the topper. Like in third year I was second rank, in fourth year I was first ranker. So in third year, what were your subjects? So in third year, geotech was the subject, and highway engineering was there. Structure was there. Why you have to think so lot? You have Sir, secured second position in that year. Sir, actually, just to differentiate that if any course does not in the fourth year or second year, so for that margin I am thinking about it. Okay. Now tell me, how would you define workability of concrete? Workability of concrete can be defined as the amount of internal work that is required for achieving the full compaction in the field. How would you measure workability? There are 3 to 4 methods, but majorly slump cone test is done in the field or in the lab, and after that compaction factor test can be done, and flow table test is also done. Any other test? Kelly ball test, VB consistometry test. If you have a very stiff concrete, how would you measure its workability? Sir, using VB consistometry test I will measure. And when is this flow table test used? Flow table test is used when the workability is very high. How much high? In terms of range, you are asking. Sir, I'm not exactly sure, but can I take a technical guess about it? Let's say greater than 150 mm in slump cone test. If it is there, then we should use. What do you understand by self-compacting concrete? Sir, in the area where there is very high reinforcement is there. So in that case, we cannot use the internal vibrator or the external vibrator in the case. So we can use compacting concrete. So that will have very high workability, and it will achieve the compaction by its own self weight. Okay. Next, I want to ask you, what is the difference between percentage air void and air content of soil? Are they same or are they different? And what is the difference? Sir, they are different. And air content is defined as the volume of
void, the air volume of void divided by, sorry sir, I am not able to recall, but it is volume of void divided by volume of solid, and in case one volume of void divided by volume of soil. So there is some difference, but I am not exactly able to recall. What is void ratio? Void ratio is volume of void divided by volume of solid. Then air content? In air content, there is volume of air, so not all void ratio will be taken. So some part of void ratio, like volume of void, will be occupied by water. Sorry sir, then I am not able to recall. What are the various type of triaxial test? CD, consolidated drain test, CU, consolidated undrained test, and UU, unconsolidated undrained test. Why we can't have UD test, unconsolidated drain test? Sir, I have heard a little bit about it, that this kind of condition does not exist really in the field. So this is... So, okay, it's not in the field, but can we simulate the condition in the triaxial testing? Sorry sir, I cannot think about it. Think. Why you can't think? Think about the procedure of triaxial test. What happens in the first stage? Consolidating stage will be there. We will Then apply in the confining second stress. stage, what you are doing? Second stage, we are applying deviator stress for like actual failure. And is the cell pressure still acting? Yes sir. So how would you conduct a UD test? In the first stage, what should be there? The drainage valve should be open or closed? UD, the drainage valve should be closed. And then after that, you will apply the cell pressure. Yes, sir. And then you will move to the second stage, of the triaxial test. Yes, There, sir. the drainage valve will be open or closed? It should be open. It is So if drain drainage test. valve is open, the first stage confining pressure is already acting. Yes, sir. What will happen with the soil? Will it remain unconsolidated or consolidated? It will remain unconsolidated. It will remain unconsolidated. If it is in U, like undrained test, if the first stage is undrained, then I think it will remain unconsolidated. What do you understand by consolidated and unconsolidated in triaxial testing? If the water is not able to go out of the system, then there will be no. You have opened the drainage valve. Now water will go out or not? In the start of second stage, you are talking. In the start of second stage, it will try to come out, but it is not getting the actual time that it will require for. UD test you are conducting. Okay, sir. Okay, Akash. Tell me, what is difference between a highway and an expressway? Sir, highway is a road that is constructed for high speed of vehicle, and it is usually made on an embankment so that the drainage will be there and flood safety and the safety from animals will be there. And in this, there will be interchanges along the way. And if it is expressway, then it is the highest class of highway that we construct in India, and the speed is around 120 kmph. And in this case, we does not construct this interchanges. So it is a direct source of connectivity between two major points. So you are saying there will be no exits on expressway? No, sir, there will be access controlled, so predefined entry and exit points will be there. So won't there be in between exits, like somebody who's standing besides an expressway? Yes. Can he not go to expressway? So there are some well-defined point from he can go, but like in between the points he cannot go. He cannot go. So I have recently heard that on Delhi-Mumbai expressway, there has been a hole which has happened. Yes, sir. Can you tell me how this has happened? Sir, the hole is happened on the Delhi-Mumbai, the Rajasthan stretch in that case. So the erosion of the soil was there. So the soil stabilization was not properly done. So because of that, the soil, the water along with
it got eroded the soil, and the soil was completely from subgrade, it was removed. So there was a subsidence, or the hole was So created. you mean to say that there were quality issues with the way the expressway has been concerned? Sir, I would say quality issue, quality in terms of like the stabilization of the soil, it was there. It was there. Yes, sir. Okay. Also, in highways, we see that on the dividers there are a lot of plants, small plants are planted. Yes, sir. Why those plants are planted? Sir, the main reason, I think it is because they want to reduce the noise pollution. And other major thing that may be possible, the reason that while constructing a highway or any expressway, we have to cut down the trees. So in order to like the balance, we will try and So why plant. why you are putting balance trees on the divider? You can plant on the other side. If you are cutting some trees, you Sir, can. you are specifically about the divider you are asking. I'm asking about divider. Sir, so that the like in the opposite side traffic that is coming, they will not in the night they will not have this flare, or the headlight of the one way will try to like cause problem to that. Can you tell me what are the different problems that you can experience on expressways? Problem, I would say that if I'm on a expressway, then I have to take a defined entry point and exit point, and if I want to go, That is not a problem of expressway. What are the different problems that you can have? sir, but my point is actually this, that if one entry point is, let's say, at this place, and another entry or exit point is let's say 10 kilometer away, and I entered from somewhere, but I want to go to some place in between, so I have to take this extra 5 to 10 kilometer route for like U-turning or something, that I would go like exit out. Okay. And other thing is it is related to the issue of land acquisition. So the people would be displaced. Let's say expressway has been constructed. You have got the land acquisition. What are the different problems which you will keep in mind while designing the expressway? So the turning radius cannot be too sharp, Okay. and like the tractive resistance should be less. So it should be like uniformly level. This is all I can think, sir. Okay. Does speed of the vehicle depend on the type of road that you are laying? I have heard that in Dubai, the roads are laid for 300 kilometers per hour speed, and in India it is only 200. So the type of road, as in a pavement, or like the geometric design consideration will totally change. So the thing that radius and elevation you have to take care. So in that sense, and after that there may be an issue with the resistance, the skid resistance, or the impact that high speed vehicle will have on the highway. So in that case, it is a difference. Okay, thank you. So Akash, Yes, sir. tell me what is average annual rainfall? Sir, average annual rainfall is the average of the yearly rainfall over a period of 30 years. How do you measure it? Sir, it is measured by the rain gauge stations, Siemens gauge, or tipping bucket, weighing bucket, rain gauge we can There are use. two types of rain gauges, right? One Yes, is recording and one is non-recording. which one is better? Sir, it depends upon the area in which it is actually constructed. So if the area is very inaccessible and we cannot go regularly there, so in that case the recording type would be better. And if the area is very
like reachable, or we can go, or is there in any office or something surrounding by that. So in that case, no recording will also be better. Now, what is watershed line? Sir, it is a line that will divide two adjacent watershed. So the water which is from rainfall, the falling which is falling from like the left side of it, it will drain to the another outlet, and in the right side of it, it will drain to the another outlet. So what is other name of watershed? Catchment area. What is datum? Sir, datum is a elevation with respect to which we measure our recording of elevation. So it is basically a reference point. What is hydraulic jump? When the water is flowing at a supercritical velocity, so it will go and change into the subcritical velocity, and by this process the very large amount of energy will be released, and this is hydraulic jump. And the application of it is in mixing of chemical in some treatment plant, and aeration we can use, and downstream of hydraulic structure for dissipation of energy we can use it, hydraulic jump. What are sequent depth? Sequent depth is the the initial to the hydraulic jump there is a depth, and after the hydraulic jump, so this depth corresponding to the same specific force, the depth are known as sequent depth. What are the various types of hydraulic jump? Sir, types I am not able to recall right now. Sure. Sir. Okay, so your interview is over. Akash, Yes, sir. we'll call you back for feedback. Thank you, sir. हाँ जी क्या आकाश जी, आपके पिछली बार कितने स्कोर रहा इंटरव्यू में? सर 130. 130. गुड. तो इस बार रिटर्न कैसा हुआ आपका? रिटर्न सर पिछली बार से बहुत बेटर हुआ है. पिछली बार रिटर्न में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. ओके. और पिछली बार कितने नंबर से रह गया था? सर कैटेगरी के हिसाब से तो ओबीसी के हिसाब से 10 मार्क्स से रह गया था. बाकी ओवरऑल जनरल देखें तो 40-42 मार्क्स. ओके. क्योंकि देखो आप आईआईटी बॉम्बे से हो तो थोड़ा सा बाहर आपके लिए हायर होगा. यस सर. एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ज़्यादा चीज़ें पता हैं. वो थोड़ा सा उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, सो डैट यू कैन रीच टू दैट लेवल. और अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं. नो सर. तो योर स्टेक्स आर ऑल्सो मोर, दैट मीन्स. तो एक थोड़ा सा दुखी क्यों लग रहे हो? दुखी तो नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं सही हूँ. हमेशा ऐसे ही गंभीर रहते हो? नहीं सर, बीच में ट्राई किया था स्माइल करने को या थोड़ा रिलैक्स होने को. मतलब मेरे पीछे बैक ऑन द माइंड चलता रहता है कि थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, इसमें थोड़ा स्माइल लानी है, पर वो जो आंसर देते टाइम थोड़ा सा सीरियस हो जाता है. ये देखो, जो लोग बोर्ड में बैठे होंगे सब 60 से ऊपर होंगे. हाँ सर. ठीक है, तो या तो तुम उनसे एनर्जी ले लो या मार्क्स ले लो. अब चॉइस तुम्हारी है. ठीक है. अब तुम स्माइल कर रहे हो, अच्छे लग रहे हो. सर वो ये थोड़ी सी ज़्यादा स्माइल है, वो थोड़ी कम स्माइल थी, बट वो बैलेंस करने की कोशिश की मैंने थोड़ी सी. नहीं, स्माइल करो ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई आप स्माइल आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी कभी. ठीक है ना? यस सर. तो थोड़ा सा ऊर्जा डालो, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है 60% ऑफ टाइम उसकी तरफ देखो, 40% टाइम दूसरों की तरफ भी देखो. हाँ. अब बीच बीच में मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर पता नहीं है. तो नहीं पता तो सिंपली बोलो कि सर आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट.
बस बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। अगर आपको 60% पता है तो बोलो मे आई टेक ए गेस, वो भी ठीक है। पर बिल्कुल नहीं पता और तुम फट्टे मारोगे तो पकड़े जाओगे। और IIT बॉम्बे का लड़का पकड़ा जाए तो फिर उसके नंबर ज़्यादा कटेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो। नहीं आता बोल ही जाओ, आई वुड लाइक टू लर्न मोर। 10 बार भी बोल दोगे कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, क्या हो गया, रिटन टेस्ट में जो देखना था देख लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस तरफ आप ध्यान दें। आई थिंक यू कैन डू वेल, कोई ऐसी बात नहीं है। आप पीछे और होकर के आराम से बैठो, ठीक है। वो मैं बोलने वाला था, थोड़ा बैक का सपोर्ट ले लो पीछे, अब देखो रिलैक्स लगेगा। हाँ, ठीक है। और हाथ को भी आपको जमाने की जरूरत नहीं, कैन यूज इट ऑल्सो, ठीक है। आप कुछ मेन तो आई कांटेक्ट है, बहुत पुअर आई कांटेक्ट था। मतलब लगातार जब तुम जवाब देते हो तो ऐसे ही देख के देते हो। भाई मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम जमीन को देख रहे हो, फिर मैं भी इधर उधर देखने लगूंगा। समझो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ देख के बात करूँगा तो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं सर। तो इंटरव्यूअर को कैसे अच्छा लगेगा? और देखो ओवर कॉन्फिडेंस मत लेके जाना। पिछली बार तुमको 130 मिले, माना मैंने, पर पिछली बार कुछ अच्छा लगा होगा तुम्हें, या पिछली बार सब कुछ क्लिक कर गया होगा। क्या क्वेश्चंस थे पिछली बार इंटरव्यू में तुम्हारे लिए? सर चेयरपर्सन सर ने तो कुछ नहीं पूछा, बस थोड़ा ग्रेजुएशन ईयर का पूछा था, अभी फ्रेश था ये बोला। उसके बाद में एक टीचर थे, उन्होंने जैसे BMC थोड़ा सीमेंट वर्केबिलिटी के बारे में पूछा था। और जैसे मैं पूछ रहा था। हाँ, और जो सेकंड उन्होंने बिटुमिन पे लिया था। बिटुमिन अगर राजस्थान में अगर कोई पेमेंट बना रहे हैं, अगर हायर एरिया बना रहे हैं। और थर्ड इन्वायरमेंट पे था, मतलब वाटर सप्लाई पे, वाटर डिमांड क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं। बोर्ड कौन सा था? बोर्ड 24 सर का था सर। 24 का। वो जनरली नंबर भी अच्छे देते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। थोड़ा तो प्रिपरेशन लगेगी अभी। अब तुम्हारे इंटरव्यू है कब? 8 तारीख को सर। अरे आई गया, थोड़ा सा टाइट कर लो यार। परसेंटेज एयर वर्ड एयर कंटेंट नहीं बता पाए। हाँ, यूडी टेस्ट कैसे होगा भाई? दूसरे स्टेज में ड्रेनेज वॉल्व खोल दूंगा तो पहले स्टेज में जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रहा है उसके कारण तो कंसोलिडेशन नहीं हो जाएगा। तुम दूसरे स्टेज में ड्रेनेज वॉल्व खोलोगे, पहले स्टेज का कन्फाइनिंग स्ट्रेस तो लग रहा है ना अभी भी। हाँ। तो उसके कारण कंसोलिडेशन नहीं हो जाएगा सॉइल का। पर वो वाटर प्रेशर एग्जैक्ट ही नहीं हो पाएगा ना, अगर ड्रेन हो जाएगा तो पानी प्रेशर कहाँ से लगाएगा? तो कंसोलिडेट हो गया ना, पानी तो निकल गया ना, सॉइल तो सैचुरेटेड है ना। लेकिन उसको कुछ प्रेशर कन्फाइनिंग प्रेशर पे भी कुछ टाइम चाहिए ना। अगर तो ड्रेन टेस्ट है, यूडी टेस्ट। ड्रेन टेस्ट में रेट ऑफ लोडिंग अप्लाइड इज वेरी वेरी स्लो। तो सेकंड स्टेज में तो मैं ऐसे ही रेट ऑफ लोड ऐसा रखूंगा ना कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आए ही नहीं। तो जब तक पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट नहीं होगा तब तक मैं नेक्स्ट लोडिंग बढ़ाऊंगा ही नहीं। तो मैं तो कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड स्टेट से कंसोलिडेटेड टेस्ट में पहुंचूंगा, तभी तो ड्रेन टेस्टिंग कर पाऊंगा, नहीं तो करूंगा कैसे? समझ रहे हो? तो यूडी टेस्ट प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैंने तुमको सपोर्ट किया ना, वहां पर भी बहुत बार सपोर्ट करते हैं। यस सर। कि देखना चाहते हैं तुम एनालिटिकली चीज़ों को समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, जरूरी नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर आ जाए, वो इंटरव्यूअर भी समझता है। तो जब मैं तुमको सपोर्ट दे रहा हूँ कम से कम तब तो थोड़ा एनालाइज करो। बट क्या हो रहा है, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड प्रेशर हो जा रहा है कि यार मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। अरे कॉन्फिडेंटली ट्राई करो। वहाँ पे इंटरव्यूअर तुम्हारी हेल्प करने भी बैठा होता है। अब तुमने एक बार तो इंटरव्यू फेस कर लिया, तुमको ये पता लग गया वहाँ पे नॉलेज टेस्टिंग नहीं चल रही है। यस सर। तुमको ग्रिल भी नहीं करते, नहीं। बस देखना चाहते हैं कि डू यू हैव अ पर्सनैलिटी टू लर्न और नॉट। यस सर। तो थोड़ा पार्टिसिपेट करो। और आई कांटेक्ट, ये सबसे वीक पॉइंट है तुम्हारा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आई कांटेक्ट बनाओ सर। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा फिर से आई कांटेक्ट नीचे, वो थोड़ा सोचने के लिए एक बार जैसे तुम सामने ही देखो भाई। सर क्वेश्चन पूछने के बाद जैसे 2-3 सेकंड का जो पॉज लेके उस टाइम में थोड़ा नीचे देख के थोड़ा तो आंसर भी नीचे रख के दे दो, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। हाँ सर, उसमें मैं देखूंगा अगर वो आंसर देने के टाइम मैं सामने कांटेक्ट करने की कोशिश तुम पूरे सामने ही रखो ना कांटेक्ट, और अच्छा लगेगा। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचते वक्त भी तुम सामने देख सकते हो क्या ये उसमें, ठीक है। यस सर। उससे एक्चुअली ना झलकता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तुम इधर उधर देखते हो तो। यस सर। वो अच्छा नहीं लग रहा है एकदम भी, ठीक। बाकी तो ऑल गुड, पर्सनालिटी वैसी तो अच्छी है ही, और IIT बॉम्बे से हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक बस लास्ट चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। सर तुमसे प्लेगरिज्म की बात कर रहे थे,
और तुम्हारे आंसर से झलक रहा था कि तुम प्लेगरिज्म को सपोर्ट करते हो, मतलब यू ट्राई टू कॉपी असाइनमेंट्स। तो ऐसे आंसर्स नहीं देने होते भाई, तुमको तो स्ट्रिक्टली सर को बोलना था कि सर मैं अपना असाइनमेंट खुद करता हूँ, मेरा कभी प्लेगरिज्म चेक होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम सर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि तुम कॉपी कर रहे हो। बहुत नेगेटिव एंड था ये तुम्हारे इंटरव्यू का, ऐसा नहीं करना है भाई, ये बहुत गलत कर रहे थे तुम, और सर खींचे जा रहे थे उसी चक्कर में। ठीक है, खींच नहीं रहे थे, राजा सर मजे ले रहे थे। वहां भी होगा, गलत आंसर दे रहे थे भाई, तुम एथिकली रॉन्ग आंसर दे रहे थे। एथिकली कोई भी वहां पे इनकरेक्ट बात नहीं बोलनी है। कहाँ ही चेयरमैन सर को खराब लग गई वो बात, तो दैट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव पॉइंट इन योर इंटरव्यू। सर डिपेंड ये भी करता है ना कि असाइनमेंट क्या है। अगर असाइनमेंट अगर है ही यही कि कैसा भी हो, तुमको तो यही बोलना है तो ओरिजिनल है सर, हमारे पास टेक्स्ट बुक है, मैंने टेक्स्ट बुक देखा। असाइनमेंट क्या करते हो सिविल इंजीनियरिंग में? लैब रिपोर्ट्स, लैब में टेस्टिंग करते हो, लैब की अपने आप कैलकुलेशन करके। सर उनमें तो हाँ, उनमें तो वो 100% प्लेगरिज्म करोगे। बट सर एक दो कोर्स ऐसे थे जो कि मतलब इंस्टीट्यूट इलेक्टिव या फिर इस टाइप से एक्स्ट्रा कोर्स लिए वाले नहीं, प्रोग्रामिंग भी नहीं सर, एक्चुअली कुछ सोशियोलॉजी का कुछ एक एनवायरनमेंट का कुछ कोर्स था, तो जिसमें थोड़ा केस स्टडी टाइप बाहर का देखना था। बात नहीं करनी कॉपी है, बोलना नहीं है, मानना नहीं है। नहीं, आपने मैं सर इस पे बोलने वाला था जी सर। आपने वो क्वेश्चन ढंग से नहीं सुना सर का। एक्चुअली में दैट इज वेयर यू वेंट इनटू दैट रॉन्ग डायरेक्शन। सर ने कहा कि आपने जो असाइनमेंट किया है उसमें आपका प्लेजरिज्म 70% दिखा रहा है। टू कट दैट शॉर्ट आपको बोलना चाहिए था कि सर मैंने अगर अपना असाइनमेंट खुद से किया है तो 5% से ज़्यादा नहीं दिखाएगा। आप बोले कि सर वो 70% है तो चैट जीपीटी को मतलब यूज़ करके मैं उसका लैंग्वेज अलग कर दूंगा, तो वो चैट सर ने फिर आपको बता ही दिया कि तो चैट जीपीटी भी कर देगा। इसका मतलब तो आप 100% कॉपी कर रहे हो। तो आप उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं सुन पाए कि सर क्या कहना चाहते थे। अगर वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम आप बोल देते कि सर अगर मैंने खुद से असाइनमेंट किया है तो प्लेजरिज्म का तो आता ही नहीं कुछ, सो वो इट वुड हैव बीन अ डेड एंड टू एवरीथिंग कि हाँ भाई। सर वो बात ये होगी ना कि सिर्फ एक या दो पर्टिकुलर कोर्स थे जिनमें मैंने लैपटॉप का यूज़ किया था। देखो चोर चोरी करता है बट वो दो चीज में दिमाग लगाता है मात्र, पहला चोरी करने में और दूसरा चोरी ना कबूलने में। ठीक है, आपने पहली चोरी करी, ठीक है, पर चोरी कबूल क्यों रहे हो भाई? सीधी बात है। वहां बोलो सर मैं ओरिजिनल काम करता हूँ, प्लेगरिज्म की वो कम चांसेस बहुत कम है। अगर सर थोड़ा बहुत हुआ तो सर वो तो अलाउड रहता है थोड़ा। क्यों सर? राइट सर। उसके बाद में आकाश आपने 2-3 चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया है। सर ने पूछा आप मिलेनियल चाइल्ड हो, आप जेनजी बोल रहे थे। उसका आंसर आप दे सकते थे कि सर आई हैव नॉट हर्ड दिस टर्म, बट इज इट द सेम लाइक दोज हु आर बोर्न आफ्टर 2000, जो सर आपसे बाद में बुलवाए कि व्हाट इज दैट टिपिंग पॉइंट। तो वो उसको आप बहुत और पोलाइटली आप आराम से आंसर दे सकते थे कि सर आई थिंक इज इट व्हाट यू मीन टू से सर। तो आप वो बोलते तो देन इट वुड हैव कम वेरी इजी। उसके बाद में थोड़ा सा जब आप आंसर करते हो तो उससे पहले सोचो कि आप बोल क्या रहे हो। आपके कुछ वर्ड्स रैंडम निकल रहे हैं। जैसे सर ने आपसे हाइड्रोलिक जंप पूछा, आपने बोला कि हाइड्रोलिक जंप तब होता है जब एक रेडियस वाटर अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम है। फिर आपने एक बीच में वर्ड थ्रो कर दिया कि इसमें एनर्जी लॉस होता है। वो एनर्जी लॉस जैसे सर ने पूछा, वो एनर्जी लॉस क्या इंटेंशनल है क्या अनइंटेंशनल है? अगर कोई बंदा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला वहाँ बैठा होगा वो घुस जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो मैं ये क्वेश्चन पूछता और मैं अगर उसमें होता तो मैं उसके अंदर घुस जाता कि वाई दिस एनर्जी लॉस, क्यों एनर्जी लॉस हो रहा है, क्यों इसको पेंट इंडस्ट्री में हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ही क्यों किया जाता है हाइड्रोलिक जंप को करने में, बिकॉज इट हैज़ गॉट एवरीथिंग, उसके पीछे की फिजिक्स बहुत बड़ी है। तो वो आपको कंट्रोल करना है कि बोलना क्या है। आपसे सिंपल हाइड्रोलिक जंप पूछा तो आपको वन वे आंसर ऐसा होना चाहिए था कि सर अगर कोई एक फ्लूइड मूव कर रहा है वो सुपर क्रिटिकल रिजीम से सब क्रिटिकल रिजीम में आता है तो देयर वी ऑब्जर्व अ हाइड्रोलिक जंप, और वो क्यों होता है, सुपर क्रिटिकल क्या होता है, सब क्रिटिकल क्या होता है, वो भी आपको बताना पड़ेगा।
तो योर आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज कि हाँ यही मैं बोलना चाहता हूँ, यही मेरा आंसर होना चाहिए। आपसे मैंने पूछा कि डिवाइडर पे प्लांट क्यों लगाते हैं, आप क्वेश्चन नहीं समझे पहले, आपने बोला सर पेड़ काटते हैं, पेड़ लगाते हैं, साउंड बैरियर होता है, दोनों गलत थे। तीसरा आपने जवाब सही दिया कि सामने जो व्हीकल आते हैं उनकी बीम लाइट ना पड़े, इसके लिए, विच इज़ द मेन रीजन। मैं साउंड वाले पे नहीं घुसा कि साउंड के लिए तो कुछ और भी कर सकते हैं, ट्रीज आप इधर भी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन को सुनो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप 2 सेकंड ले सकते हो, बट इट हैज़ टू बी वेरी, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। मैंने आपके लिए हार्ड क्वेश्चन 10 रखे थे कि इनसे इससे तो मैं ये सवाल पूछूंगा, तो वो 10 क्वेश्चन आपके आंसर सही जा रहे हैं। आपने बोला कि एक्सप्रेसवे पे गड्ढा क्यों हो गया, उसका परफेक्ट रीजन था, इट वाज परफेक्ट आंसर, फ्लॉलेस आंसर, बट उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप में प्रेजेंट कर दोगे, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। आपको 130 लास्ट टाइम मिले इसीलिए बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव एवरीथिंग। उस 130 को इस बार 150 में कन्वर्ट करो, एंड डोंट थिंक कि 130 आ गए तो इस बार भी 130 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उनको नहीं पता है कि आपको 130 दिए हुए लास्ट टाइम, दे विल जज इंडिपेंडेंटली, तो यू हैव टू परफॉर्म वेल। ठीक है सर, वही है यार, थोड़ा एनर्जी लाओ, और मुझसे बात करते समय केवल मुझे देख रहे हो। नंबर सबको देने हैं, यस सबको दे दो, बाकी सर लोगों ने सब बता ही दिया। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो लास्ट में जाते जाते, तुम ऑफिसर बन गए, ऑन अ स्केल 1 to 10 कितना करप्शन करोगे? सर 0। अरे यार थोड़ा तो सब करते ही हैं। ऑन अ स्केल 1, 0 तो देखो पॉसिबल ही नहीं। ऑन अ स्केल 1 to 10 कुछ तो करोगे यार, थोड़ा तो सब कर रहे हैं। ऑन अ स्केल 1 to 10 कितना करोगे? नहीं सर, आई थिंक मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, जैसी प्रैक्टिस मेरे को मिले, सो आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। मतलब ऐसे ही आंसर एक्सपेक्ट करेंगे, नेगेटिविटी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है? सर मार्क्स इसमें आए। सर 8 अक्टूबर को है इसका। 8 अक्टूबर को आप, यस सर। कि पिछली बार आपके 130 आए, तो आप अपना पोटेंशियल उतना तो मान के चलो, ठीक है, उससे ज़्यादा ही आना चाहिए। यस सर। थोड़ा सा एक्टिव रहो, अलर्ट रहो, एनर्जेटिक रहो। अब इंटरव्यू वाले दिन 2 घंटा पहले आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तक ले लेना। ओके। सुबह या कि शाम को इंटरव्यू? सुबह सर। सुबह, ठीक है। तो आप इस बार मान के चलो, आपके इससे 120 तो कहीं नहीं गए, और ज़्यादा आने चाहिए। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।